Jai Hind, dear students of class 10. Welcome you all again in geography class. And today I'm going to start with the topic maize. I'm going to discuss about the maize. This is the season you can get in market. भुट्टा बहुत बिक रहा है, गरम गरम खाने में अच्छा भी लगता है. In American English, maize is known as corn. Cornflake की भी बहुत डिमांड होती है. Yes, correct. So it is a crop which is used both as food and fodder. मक्का एक ऐसा क्रॉप है जिसका इस्तेमाल दो तरह से होता है. जो हरा चारा के रूप में काट के खिलाया जाता है, जानवरों के लिए फॉडर का काम करता है, और इसका जो बालियां होती हैं इसको तोड़ते हैं, इससे जो अनाज का दाना निकलता है वो फूड का काम करता है. इट ग्रोज वेल in the temperature condition between 21 degrees Celsius to 27 degrees Celsius in old alluvial soil. Which soil is ideal for the growth of maize? Old alluvial soil called Bhangar. And the state like Bihar, it is important to know that state like Bihar, maize is grown in Rabi season also. In Bihar, it is asked in MCQ question, in which of the following state maize is also grown in Rabi season? So here you can see Bihar. Bihar, maize is grown in Rabi season also. Use of modern inputs such as high yielding variety of seeds, fertilizer, irrigation have contributed to the increasing production of maize in India. And now, commercial demand for making different types of food stuff, food items like cornflake, etc. Now, corn is having a great demand. Locally, भूजा भी खाया जाता है, इसको भून के खाया जाता है. तो कहते हैं मकई का लावा खाते हैं ना. Yes, of course. The maize producing states are Karnataka, Uttar Pradesh, Bihar. In Bihar, it is then grown in this season, Rabi season, but it is basically a Kharif crop. It is basically a Kharif crop, but in Bihar, it is also grown in Rabi season. So the major states are Karnataka, UP, Bihar, Andhra Pradesh, Telangana, Madhya Pradesh, etc. Pulses. It is important part as far as concerning your board examination. Pulses. India is the largest producer as well as consumer of pulses in the world. You know, in our food habit, in our meal, we are having general tradition that chawal dal, roti sabji, roti dal, dal roti khana hai. We are having concept, yes, and it is all because it is the cheapest source of protein for a vegetarian person. एक वेजिटेरियन डाइट के लिए सबसे चीपेस्ट प्रोटीन बेस क्या है? दैट इज पल्स, दाल. तो दालों के प्रोडक्शन में इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है एज वेल एज कंज्यूमर भी है. दीज आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन अ वेजिटेरियन डाइट. मेजर पल्सेस दैट आर ग्रोन इन इंडिया आर तूर मींस अरहर. हियर यू कैन सी द नेम गिवन. तूर, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, पीज एंड ग्राम. Peas and gram. Here it is asked, can you distinguish which of these pulses are grown in Kharif season and which are grown in Rabi season? In Rabi season, especially two you have seen, peas and gram. One more, masoor is also grown, and the rest are there in Kharif season. Pulses need less moisture. It is important part. Pulses need less moisture and survive even in dry conditions. Being leguminous crops, all these crops except arahar help in restoring soil fertility by fixing nitrogen from the air by the one bacteria called ribosium. So these are called leguminous crops and refixing nitrogen to the soil and increasing its fertility. Therefore, these are mostly grown in rotation with other crops. Major pulse producing state in India are Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Rajasthan, Maharashtra and Karnataka. And which pulse, especially arahar, is having a great demand. For some time, as our demand is very high, we are the largest producer as well as consumer also. Sometimes, due to lack of production, we need to import it at large quantity from different countries. Food crops other than grains. Now we are going to discuss about some of the other food crops which are utilized as food crop, but they are not grains. वो अनाज नहीं है लेकिन food crop है, like sugar cane, गन्ना सब लोग जानते हैं.
Sugarcane is a tropical crop. It can also be grown well in there in subtropical condition. It requires a temperature between 21 to 27 degrees Celsius and annual rainfall between 75 centimeter and 100 centimeter. Even sometime if flood is coming and water is locked for few days, there is no loss for this crop, especially in Tarai region of Uttar Pradesh and Pilibhit, Lakhimpur Kheri. Uttar Pradesh is the largest producer of sugarcane in India. So, due to flood water, the fertility of soil increase and it is helpful sometimes for the growth of this sugarcane. Irrigation, if there is less rainfall, irrigation is required in regions where rainfall is low. It can be grown on a variety of soils, need manual labor from sowing to harvesting. इसकी कटाई करना, इसकी बुआई करना, दोनों में ही मैनुअल लेबर जैसे राइस के लिए चाहिए, इसमें ह्यूमन लेबर की जरूरत पड़ती है. India is the second largest producer of sugarcane, only after Brazil. It is important. India is second largest producer of sugarcane only after Brazil. Till 80s, India was the largest producer. It is the main source of sugar. चीनी बनाने के लिए भारत में मुख्य जो फसल है वो कौन सी है? सुगरकेन. गुड़, इन इंग्लिश कॉल्ड लाइक जैगरी. गुड़ हम लोग के खाने के हैबिट में है. खांडसारी, इट इज अ न्यू वर्ड आई थिंक फॉर यू. खांडसारी, व्हाट इज खांडसारी? डू यू नो? देसी चीनी. देयर आर sugar mills which are processing sugarcane, obtaining juice and they process with the modern method to make sugar. चीनी बनाती हैं वो, लेकिन देसी चीनी गुड़ से तैयार किया जाता है, उसको खांडसारी बोलते हैं. एंड मोलासेस, महिया, जब इसके जूस को पकाया जाता है, जब ये गाढ़ा होने लगता है उसको महिया बोलते हैं या राब बोलते हैं. द मेजर सुगर कैन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा. नाउ we have to recall what are the important geographical conditions required for the growth of sugarcane. In examination question is asked, explain the geographical condition for growth of sugarcane, or explain the cultivation of sugarcane under the following heads: temperature, rainfall, soil, manual labor. Heading will be given. You have to explain accordingly. So it is a tropical as well as subtropical crop. As the name, tropical and subtropical requires more water, more temperature. So condition which is ideal for it, number one is temperature between 21 degrees Celsius to 27 degrees Celsius. Annual rainfall between 75 to 100 centimeter. Alluvial and black soil. Do you know? In Maharashtra, in the area of black soil, the canes produced are of better quality, containing more juicy, because in South India, the climatic condition is more favorable for growth of sugarcane, but those areas receive low rainfall. Because of that, they are doing irrigation. Canes are no doubt is of better quality produced over there because of oceanic climatic condition. But excess use of water for irrigation, especially in Maharashtra, sometime late the crisis of water in entire state, even in Karnataka. So, soil which are ideal for growth of this is alluvial and black soil. A large number of manual laborers are also required. Distribution you have seen: Uttar Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, etc. As well as one important thing, India is the second largest producer of sugarcane only after Brazil. Like rice, in rice production, India is also second in the world after China. Now, oil seeds. Oil seeds. In India, we consume lot of edible oil. भारत में खाने पीने में तेलों की बहुत प्रधानता है. हम बहुत ज्यादा तेल कंज्यूम भी करते हैं. Once Atal Bihari Vajpayee have asked people, if you can consume little bit lesser the edible oil, India's dependency for this edible oil to other countries and a lot of expenses, foreign exchanges for importing it will be reduced a lot and can make India's economy better. उन्होंने मजाक में ही बोला था, अगर खाने के तेल का इस्तेमाल हम थोड़ा ही कम कर दें तो पूरे साल में इतना बचत हो जाएगा कि भारत को बहुत सारा विदेशी मुद्रा का भंडार जो है बचत हो जाएगा. Okay, that is another case.
In 2008, India was the second largest producer of groundnut in the world. Groundnut, मूंगफली. In rapeseed production, India was third largest producer in world. देखो एक नया वर्ड आपके लिए आया है, रेपसीड. रेपसीड, लिनसीड का नाम सुने हो, तीसी. उसी तरह का, उसी का एक वैरायटी होता है, उसको रेपसीड बोलते हैं. रेपसीड का मतलब होता है अलसी. Production of India was third largest in world after Canada and China in 2008. Different oil seeds are grown approximately. The importance of this oil seed cropping in India is that about 12% of the total cropped area of the country is there under cultivation of oil seeds. And the oil seeds produced in India are groundnut, mustard, coconut, नारियल का तेल. साउथ इंडिया में नारियल का तेल खाते भी हैं. सीसामम, तिल, सोयाबीन, कैस्टर सीड, अरंडिका तेल, कैस्टर सीड बोलते हैं अरंडिका तेल, इसका आयुर्वेदिक मेडिसिन भी बनता है. कॉटन सीड्स खाने में इस्तेमाल नहीं होता, मेडिसिनल यूज है. लिनसीड एंड सनफ्लावर. मोस्ट ऑफ दीज आर एडिबल एंड यूज्ड एज कुकिंग मीडियम्स. साइड बाय साइड, some of these are also used as raw material in production of soap, cosmetic and ointments. ऑइंटमेंट बनाने में, कॉस्मेटिक बनाने में, सोप बनाने में. एक तो डाबर निहार आंवला सरसों तेल. सरसों तेल तो प्राचीन समय से इंडिया में, भारत में लगाने की प्रथा है सिर में, लेकिन अब उसको, ये शुद्ध सरसों का तेल है, इसको सिर में लगाने से सिर के बाल अच्छे रहते हैं. इवन फॉर आवर हेल्थ, इफ यू आर कंज्यूमिंग प्योर ऑयल, इट इज रियली गुड. Here it is given about the groundnut. It is a kharif crop and accounts for about half of the major oilseed produced in the country. Groundnut is a kharif crop and accounts about half of the major oilseed produced in the country. जितने भी ऑयलसीड का प्रोडक्शन है उसका आधा लगभग ग्राउंडनट है, मूंगफली है, और सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, ये एग्जाम में आता है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो, गुजरात was the largest. As here it's given was the largest, not is the largest, but according to this data we will do the map work. If it will ask one of the leading producer of groundnut in India, we'll locate Gujarat and label Gujarat. Tamil Nadu in 2011-12. After Gujarat, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. Linseed and mustard are rabi crops. तीसी और मस्टर्ड ये क्या है, रबी क्रॉप्स हैं. गेहूं के साथ भी सरसों लगा दिया जाता है. सरसों जल्दी बड़ा होता है, जल्दी उसमें फल आते हैं, जल्दी पकता है. फिर फार्मर्स उसको उखाड़ लेते हैं और घर ले जाते हैं हार्वेस्टिंग करके, दाना उसका निकाल के सेपरेट कर लेते हैं. व्हीट बाद में रेडी होता है. तो मिक्स क्रॉपिंग के पैटर्न पे पूरे नॉर्थ इंडिया में लगाया जाता है ताकि घर में ऑयल सीड को क्या बोलते हैं हिंदी में, तिलहन, तिलहन की भी पैदावार हो जाए. सीसामम और तिल, तिल का ढूंढा, तिलकुट, रेवड़ी, ये सब फेमस है ना. यस, सीसामम इज खरीफ क्रॉप इन नॉर्थ. नॉर्थ इंडिया में तो सीसामम यानी तिल को खरीफ में रखते हैं, खरीफ क्रॉप है, बट रबी क्रॉप इन साउथ इंडिया. कैस्टर सीड इज ग्रोन बोथ एज रबी एंड खरीफ. सो व्हिच वन ऑफ द ऑयल सीड ग्रोन इन बोथ द रबी एंड खरीफ सीजन? इट इज द कैस्टर सीड. One more question can be asked. Now we are going to discuss about the beverages. We are going to discuss about the beverages. The beverages means पेय पदार्थ. Beverages means पेय पदार्थ. The tea cultivation, tea, coffee, cocoa, these are the beverages. In India, the tea cultivation was introduced by the Britishers, especially in northeast and northeast India, especially in Assam, Brahmaputra Valley, as well as North Bengal above the belt of Mahananda River in Darjeeling district. So given tea cultivation is an example of plantation agriculture. Yes, of course. Plantation agriculture hai. It requires a huge area to grow those crops and we need scientific method of farming also. It requires a managerial ability, a lot of technical support, as well as cheap and skilled laborers are also required. It is also an important beverage crop which was introduced in India by Britishers initially. So question asks, which one of the, name the beverage crop initially introduced in India by the Britishers? You can write that time, tea. Explain the geographical condition required for its growth. Today,
Most of the tea plantation owned by the Indians, whether first they were developed by Britishers, but today most of the Indian tea gardens, चाय के बगीचे भारतीय लोगों द्वारा ओनरशिप में है। कारण क्या है? ये कोई छोटे मोटे फार्मर्स इसको नहीं बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। मोस्टली इट हैज एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। टी लीफ को प्रोसेस करने के लिए फैक्ट्री की भी जरूरत होती है, क्योंकि ये पेरिसेबल होता है। सुबह का टी लीफ शाम तक अगर प्रोसेस ना कर दिया जाए तो खराब हो जाता है। सो टी प्लांट्स ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल एज वेल एज इन सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, इंडोड विथ deep and fertile, well-drained soil. Look at here carefully. It requires deep and fertile, well-drained soil. Well-drained means the soil which is the soil must be rich in organic content, of course. Rich in humus and organic content ज़्यादा होना चाहिए soil में, and well-drained. बारिश भी throughout the year होनी चाहिए, rainfall, लेकिन पानी रुकना नहीं चाहिए, well-drained होना चाहिए. I have discussed later one question related to this. Tea bushes requires warm and moist tree. Here it is given. Tea bushes requires warm and moist, frost-free climate. इसके लिए गर्मी और moist, उमस भरा मौसम अच्छा होता है, but frost is injurious to this plant. लेकिन पाला पड़ जाए तो प्लांट खराब हो जाता है. So mostly grown in those areas which are frost-free. Frequent showers are evenly distributed over the years, ensure continuous growth of tender leaves. और अगर साल में लगभग 6 महीने 8 महीने बारिश होती रहती है हल्की फुल्की भी, तो टेंडर लीव्स नई नई पत्तियां निकलती रहती हैं, उसी को हम लोग हार्वेस्ट करते हैं और उसी से चाय की पत्ती बनती है। जो काले काले रंग की चाय की पत्ती आप लोग घर में इस्तेमाल करते हो, ये बनती है हरी पत्ती से ही। टी इज अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। बहुत सारा मैनुअल लेबर की इसमें जरूरत पड़ती है। इट रिक्वायर्स अबंडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबर, especially in India. Now see this tea cultivation. You can observe on a slopy area tea cultivation is done. Tea leaves harvester, देखो खास करके महिलाएं इस काम में निपुण होती हैं। उनकी छोटी छोटी उंगलियां होती हैं, बड़े आराम से प्लकिंग कर लेती हैं। साग की खुटाई करती हैं ना महिलाएं, वैसे ही ऊपर से जो हरी हरी पत्तियां हैं छोटी छोटी, उसी का इस्तेमाल करते हैं चाय पत्ती बनाने में। उसको तोड़ना ये खास करके फीमेल, बट दे नीड skill for this. So cheap and skilled labor is also required. As well as I told you, it is processed within the tea gardens to restore its freshness. और इसकी ताजगी बनी रहे, खुशबू बनी रहे, इसीलिए इसमें बड़े बड़े गार्डन्स में फैक्ट्री भी लगी होती है ताकि उसके फ्रेशनेस को मेंटेन रखा जाए, जल्दी से उसकी प्रोसेसिंग हो जाए। इस फिगर से एक चीज बहुत ख्याल करके देखो, टी प्लांट्स आर ग्रोन ऑन स्लोपी एरिया और ऑन द स्लोप ऑफ द माउंटेन्स। Why? Why tea plantations are mostly found on the hill slopes or a slopy area? Very simple reason. Tea plants require rainfall in large quantity, more than 200 centimeter per year, equally distributed. पूरे साल इसको बारिश चाहिए, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा चाहिए, बहुत बारिश चाहिए, but tea plant cannot survive in stagnant water. लेकिन ये रुके हुए ठहरे हुए पानी में नहीं हो सकता है। So mostly grown on hill slopes that water after rain will drain out easily. And the major producing states, here you can see the major tea producing states in India are the Assam. Assam accounts about half of the tea production of India, and the Assam produces the best quality liquor tea of the world. Hills of Darjeeling. Darjeeling is famous for green leaf tea. Jalpaiguri district. Jalpaiguri district also producing huge quantity of tea in India. In West Bengal, located very close to Darjeeling district. Then other state in south, you can see Tamil Nadu, Kerala. Apart from these, now in Himachal Pradesh, Uttarakhand, Meghalaya, Andhra Pradesh and Tripura also tea production is going on. But the major states, suppose in examination this question will ask, locate and label one leading tea producing state of India. Which state you want to locate? Of course, we have to locate Assam, because Assam accounts about half of the total tea production of India. So the major producing states we have to always locate. Clear? In 2008, you can see the last event, India was the third largest producer of tea after China and Turkey. Earlier, it was believed that India is the leading producer in the world. Then
Simultaneously, tea plantation has grown in different parts of the, even in Kenya, Sri Lanka, plantation has well grown up. So you can see we are third in production of tea only after China and Turkey. Clear? Now the question, which beverage crop was initially introduced by Britishers in India? Answer is tea. And what are the main geographical conditions required for its growth? I'm explaining once again the conditions required for its growth. Number one, temperature. Not given clearly anywhere, but the notes I will send to you, it will be there. It will be there, and accordingly you have to write in your examination also. Temperature should be 24 degrees Celsius to 35 degrees Celsius, warm and moist. 24 से लेके 35 डिग्री सेल्सियस वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट की है, और 25 डिग्री सेल्सियस इज आइडियल. सेकेंड, रेनफॉल 150 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर. More rainfall is required, but tea plantation are done on hill slope. Why? Because tea plant cannot survive in stagnant water. Soil should be deep and fertile, well drained, rich in humus and organic content. Other conditions, first, frost is injurious to this plant. Frost, पाला, जब ओस की बूंदें आइस क्रिस्टल में बदलती है उसको पाला बोलते हैं, जब ठंड अधिक हो जाती है विंटर नाइट को, तो पाला इसके लिए इंजीरियस है. और दूसरा इंपॉर्टेंट, it is a labor intensive agriculture, requires cheap and skilled labor, and the main producers are Assam, West Bengal, Tamil Nadu, Kerala, etc. And India is the leading producer as well as exporter of tea in the world, and it is clear to you all now, as per data 2008, India was the third largest producer of tea only after China and Turkey. So India is also a leading producer and exporter of tea in the world. Second beverage crop we are going to discuss is the coffee. In 2008, India produced 3.2% of the world coffee production only. कॉफी के प्रोडक्शन में इंडिया का शेयर बहुत कम है. ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, नो डाउट. बट डू यू नो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कॉफी: कॉफी अरेबिका, कॉफी लाइबेरिका, कॉफी रोबुस्टा. द बेस्ट क्वालिटी इज having a mild taste is the coffee arabica. India is the producer of which variety? Do you know? Coffee arabica, which is known for its plain flavor and taste in the world. So where our production is very meager, only 3.2% of the world, Indian coffee is known in the world for its good quality. The arabica variety initially brought from Yemen, produced in the country. ये सबसे पहले कॉफी इंडिया में लाया कौन? Story is related to here with a Sufi saint. सूफी, इस्लाम में एक सूफी दर्शन भी है. सूफी सेंट थे, उनका नाम था बाबा बुदन. वो यमन से कॉफी का पौधा लेके आए और कर्नाटका के नीलगिरी में लगाया. तो जिस क्षेत्र में लगाया वो आज पूरी के पूरी तरह से वहां पे कॉफी गार्डन डेवलप्स हैं, और उसको हम लोग बोलते हैं बाबा बुदन हिल्स और बाबा बुदन हाइट्स. So Arabica variety initially brought from Yemen is produced in the country. This variety is in great demand all over the world. And initially cultivation was introduced on Baba Budan Hills by a Sufi saint Baba Budan. So the hill is named as Baba Budan Hills, and even today cultivation is confined to Nilgiri in only 3 states: Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. अभी कॉफी का प्रोडक्शन जो है 3 ही स्टेट में होता है बेसिकली इंडिया में. सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कर्नाटका, आर यू ऑब्जर्विंग दिस, केरला एंड तमिलनाडु, एंड द रीजन इज द नीलगिरी. मैप में ध्यान से देखना, ट्राई जंक्शन, जहां तीनों ही स्टेट के सीमाएं मिलती हैं, ट्राई जंक्शन, उस हिल रेंज का नाम है नीलगिरी. और पूरे के पूरे नीलगिरी पे कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में कॉफी प्लांटेशन वेल डेवलप्ड है, एंड द बेस्ट क्वालिटी कॉफी अरेबिका इंडिया इज प्रोड्यूसिंग. इट्स टेस्ट इज माइल्ड, sober, having a lot of demand there in European market especially. Another coffee is called Liberica. It is least strong, and Robusta, which is very much strong, बहुत कड़वा होता है. So the mild coffee Arabica, Nescafe Classic आता है ना, yes, this type of good quality coffee, which is the Arabica, having a lot of demand in the world market. Next part we are going to discuss the horticulture crops. Data is old. In 2008,
India was the second largest producer of fruits and vegetables in the world, only after China. Yes, of course, China is having more population than India. They require more vegetables and fruits. India is the second largest in production of vegetables and fruits. Do you know what the things we are producing maximum? So given, you can see India is a producer of tropical as well as temperate fruits like mangoes. सीजन चल रहा है, लास्ट सीजन है, सीजन का लास्ट एंडिंग है ये, मान लो मैंगोज पूरे इंडिया में लगभग होता है। महाराष्ट्र और अल्फांसो, महाराष्ट्र में बेस्ट क्वालिटी का आम होता है, उसको बोलते हैं अल्फांसो। उत्तर प्रदेश की दशहरी, बनारस उत्तर प्रदेश में ही है, यहाँ का लंगड़ा, बिहार का चौसा, ये सब फेमस है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल का मालदा डिस्ट्रिक्ट फेमस है, वहाँ बहुत बड़े बड़े आम होते हैं। हालांकि उसका मोस्टली यूटिलाइज वो लोग करते हैं मसालों में, लेकिन उसको फजली बोलते हैं, काफी बड़े साइज का आम होता है, 1-1 किलो तक, 2-2 किलो तक वेट का। ऑरेंजेस ऑफ नागपुर विच आर वेरी स्वीट। चेरापूंजी मेघालय, चेरापूंजी मेघालय में भी ऑरेंजेस होते हैं, नेचुरल कंडीशन इन वाइल्ड ऑल्सो। बनानास ऑफ केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भूसावल एक जगह है, वहां का केला पूरे इंडिया में फेमस है। लीची एंड गुआवा ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार, बिहार में मुजफ्फरपुर लीची के लिए फेमस है, और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में नव प्रयागराज फेमस है गुआवा यानी अमरूद के लिए। सो ग्रेप्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, एप्पल्स, पियर्स, एप्रिकॉट एंड वॉलनट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश आर द ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और यहाँ होने वाले जो भी ये इस तरह के, यहाँ देखो फिगर दिया गया है, यू कैन ऑब्जर्व दिस फिगर। एप्रिकॉट, ये एप्रिकॉट, देन एप्पल, यू कैन सी कटीली झाड़ी की तरह होता है, और कितने सारे एप्पल्स हैं इस पे आप देख सकते हो। पॉमग्रेनेट, अनार, आजकल तो गुजरात में भी बहुत ज्यादा पॉमग्रेनेट का पैदावार होने लगा है, अमरेली डिस्ट्रिक्ट में। मॉडर्न मेथड ऑफ एग्रीकल्चर इस्तेमाल करके, सेमी एरिड एरिया है, लेकिन वहां के पॉमग्रेनेट काफी बड़े, मीठे और अच्छे होते हैं। India produces about 13% of the world's vegetable. It is a good figure. It is recorded data. A lot of fruits, sorry, a lot of vegetables where data we have not finding the data for them also produced in India. At least 13% is enough. It is an important producer of pea, cauliflower, onion, cabbage, tomato, brinjal, potato, etc. So here question is asked, explain the horticulture crops in India. So the very first you have to write features. It is generally asked in 5 marks. So you have to write first, India is a producer of tropical as well as temperate fruits. One feature, and some examples like mangoes of Maharashtra, Andhra Pradesh, oranges of Nagpur, Cherrapunji, etc. You can give as a first feature. Second feature, what will be the second feature? You have to write about the fruit production of Jammu Kashmir, like apples, pears, apricots, walnut of Jammu and Kashmir, etc. 2 features you can write. Third, India produces about 13% of the world's vegetables. Fourth, it is an important producer of pea, cauliflower, onion, cabbage, etc. And this is a small content. Through this, you can make 5 points, and it is important question for this year, I think. So prepare this part. At least tea and horticulture, I hope will come this year in examination. So prepare it well. Next we will discuss about the non-food crops. Rubber. Rubber is a equatorial crop, but under special conditions it is also grown in tropical and subtropical area. It requires moist and humid climate with rainfall more than 200 centimeters and temperature also very high, above 25 degrees Celsius. It is an important industrial raw material for making rubber and mainly grown in India. The states are Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Andaman Nicobar, Garo Hills of Meghalaya, etc.
In 2010-11, India ranked 4th among the world's natural rubber producer. Do you know which country is the largest producer of natural rubber? It is Malaysia. Clear? So for rubber, I am going to conclude today with rubber. Next class we will discuss about fiber crops like cotton, jute, etc. So thank you. Have a nice day.